28 नवंबर 2022 करंट अफेयर है। सेकंड हाईलाइट शुरू करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे said that assuming the G20 presidency was a huge opportunity for India and that the country must utilize it by focusing on the global good. He said this during his monthly radio broadcast Man Ki Baat. India will assume presidency of the powerful grouping G20 on December 1. For India, it is a huge opportunity. India must utilize the opportunity of G20 leadership by focusing on global good and welfare, he said. But be it peace or unity, sensitivity towards environment or sustainable development, India has solutions to challenges related to such things. The PM mentioned that he received a hand-woven G20 logo woven by Yeldi Assam lifts travel curves to Meghalaya. नरेंद्र मोदी, ठीक है, along with a letter stating that it was a matter of great pride for India to host G20 summit next year. He said, I was very happy to see how connected even a person sitting in a district in Telangana could feel with the summit like G20. ठीक है, तो G20 हैंड वुमन लोगो क्या है? येल्दी असम, वुमन बाय किसने करा? येल्दी असम ने। थर्ड हाईलाइट है कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। एट्थ न्यूज़ क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ जजेस में ये जो आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस में बी नीडेड फॉर एक्सचेंज ऑफ टैलेंट अक्रॉस द कंट्री and to prevent the emergence of local cliques in the judiciary. However, the power of transfer has always been seen as a possible threat to judicial independence. Even under the collegium system, it seems it is difficult to dispel the impression that the threat of transfer hangs over every judge's head. The memorandum of procedure is clear that a judge's consent is not necessary to effect a transfer. The current norm is that all transfers ought to be in public interest, that is, for better administration of justice throughout the country. It also says the personal factors of the judge, including his preference of places, should invariably be taken into account. No one knows if these requirements are fulfilled in each case. Why a peasant judge should be shifted to another state without being made a chief justice is seldom explained. Usually, it sets off speculation that the reasons are either allegations against the judge or the discomfiture that his judicial orders are causing to the government. Disclosure of the actual reasons may not always be possible. However, it hardly needs to be stressed that transfer cannot be used as a punitive step. The time may have come for a complete review of the provisions for the transfer of High Court judges. ठीक है, तो बोला कि कॉमन क्रिटिसिज्म दैट द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इज ओपेक and sometimes arbitrary seems to hold greater validity in the matter of transfer of judges from one high court to another. A recent round of transfers among the dozens that have been effected in the last few years has brought the controversial issue to the fore again. ठीक है, तो बेसिकली बोला गया है कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, ठीक है, जजेस की ट्रांसफ़र का, उसमें जो जजेस की ट्रांसफ़र करनी है उसकी आज्ञा या उसका कंसेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो कलेजियम सिस्टम है वो अफेक्ट करता है ट्रांसफ़र्स को। देखो, ट्रांसफ़र के एंड में तो प्रेसिडेंट के साइन करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिसीजन है एट द बैक वो कॉलेजियम सिस्टम लेता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, और बेसिकली इस आर्टिकल में ये बात बोल रही है कि जो ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए, ठीक है, जुडिशरी को बेटर करने के लिए करना चाहिए, रैदर दैन कि हम जो है उसको एज ए प्यूनिटिव का मतलब क्या है, रैदर दैन एज अ पनिश या किसी को सज़ा देने के रूप में। कि जैसे मान लो कि कोई अच्छी मतलब कि अच्छी तो नहीं बोल सकते, मतलब
ये बोल सकते हैं कि जज को ऐसा ना लगे कि वो एक किसी हाई कोर्ट का, मान लो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, ठीक है, उसमें पाँच उसके नीचे 5 जजेस हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, सपोज करो, और कोई एक और हाई कोर्ट है, उसमें 3 ही जजेस बैठते हैं, ठीक है। तो अगर 5 जजेस का वो चीफ जस्टिस है, अगर उसको 3 बेंच का चीफ जस्टिस बना दी जाए हाई कोर्ट्स का, तो क्या ये पिनिटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये वाली बात बोली गई है। और दूसरा बोला गया है कि जब ट्रांसफ़र करते हैं तो क्रिटिसिज्म ये है कि उनके रीजन जो होते हैं वो उनको हम सीक्रेट रखते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल बोल रहा है कि ठीक है, कुछ रीजंस को आप सीक्रेट रख सकते हो, छुपा के रख सकते हो, लेकिन जो बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है, जिनसे नेशनल सिक्योरिटी है या वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर जुडिशरी सिस्टम के ऊपर मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जो रीजंस हैं जो पब्लिक में, डोमेन में, पब्लिक में हम बता सकते हैं, वो बताने चाहिए, ठीक है। अगर नॉर्मल कोई रीज़न है, अगर हमने मान लो किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशरी को इम्प्रूव करना है और उसके लिए हमने ट्रांसफ़र करी इंडिया में, तो उसका रीज़न स्टेट होना चाहिए, हाँ जी हमने इसलिए करी कि यहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम और अच्छा हो, है ना। तो वो वाली बात बोलेगी इस आर्टिकल में, व्यू पॉइंट शो किया गया है प्रकार का, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 9th पेज में आर्टिकल है, ठीक है। तो सेकंड हाईलाइट से शुरू करेंगे। तो 2 weeks ago when the world population touched 8 billion, several headlines focused on how India was the largest contributor to the last billion, as is set to surpass China as the world's most populous nation by 2023. China's population has begun to decline, while India's population is expected to grow for another 40 years, they said. But missing in this conversation is the real threat of depopulation that parts of India do face, and the country's complete lack of preparedness to deal with it. By current United Nations estimates, India's population will begin to decline only in 2063, by which time it will be just shy of 1.7 billion. The world's population is expected to grow until 2086. Given that China's population has begun to decline, these estimates about India have led to alarmist calls for restrictions on family sizes. Such remarks have increasingly assumed an anti-Muslim tone. फिर फर्स्ट हाईलाइट आती है कि ऑन द अदर हैंड डेमोग्राफर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स एंड पॉलिटिशियंस इन द कंट्रीज सच एज जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोप, विच आर एक्सपीरियंसिंग falling fertility and nearing the inflection point of population declines, are beginning to talk about what the future holds and whether reversal is possible. However, the global conversation around depopulation is missing some key elements. Without talking about equitable sharing of housework, access to subsidized childcare that allowed that allows women to have families as well as a career, and lowered barriers to immigration to enable entry to working age population from countries which aren't yet in population decline, the narrative can sometimes be tinged with anti-feminism and ethnic superiority. And this is precisely why India needs to step into and have this conversation. केरला के बारे में थर्ड हाईलाइट बोला, केरला विच अचीव्ड रिप्लेसमेंट fertility in 1998 and Tamil Nadu in 2000 are examples. Moreover, even in states with relatively high fertility, many cities have been at the replacement rate or below the replacement rate for over a decade, if not more. The National Family Health Survey estimated India's urban fertility rate in 2019-21 to be 1.6, which places it next to the UK. With falling mortality barring the pandemic, the total population of these states will continue to grow for the next few decades, which means that fewer working age people must support more elderly people than ever before. Among the female elderly in particular, economic dependence is a serious concern. A depopulating future poses at least 3 unique challenges to India. First, a skewed sex ratio remains a danger. As the latest round of National Family Health Survey showed, families with at least one son are less likely to want more children than families with just one daughter. Second,
The stark differences between northern and southern states in terms of basic literacy as well as enrollment in higher education, including in technical fields, will mean that workers from the southern states are not automatically replaceable. And third, the sharp anti-Muslim tone in the conversation has remained, even though fertility between the Hindus and the Muslims is converging. Last highlighted conversations around fertility reductions in the southern states are often framed around the price that these states are having to pay in relation to others in terms of the share of the federal tax receipts or political representation. But there is also the question of the price their own citizens will have to bear in terms of economic productivity and welfare sustainability. With decades to focus on lowering fertility, the conversation in India is stuck in a rut. It is for the southern states to break away from this outmoded, data free rhetoric and join the global conversation on depopulation. ठीक है, तो ये आर्टिकल बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में, डीपॉपुलेशन के बारे में बात करता है. डीपॉपुलेशन मतलब कि हमारे जो इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें ठीक है सरप्लस पॉपुलेशन है, लेकिन उन स्टेट्स में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी लेवल कितना होता है 2.1 होता है फर्टिलिटी रेट फॉर रिप्लेसमेंट लेवल. ठीक है, तो उससे कम है. ठीक है, और इंडिया में भी अभी जो डीपॉपुलेशन यानी कि फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है. ठीक है, बाकी तो सभी डाटा और यही हैं, फैक्ट्स ही हैं. पेज नंबर 10 पे सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ on November 25 issued notices to the center and the Attorney General of India seeking their response to two petitions filed by gay couples to allow solemnization of same-sex marriage under the Special Marriage Act 1954. ये परसों भी न्यूज़ आई थी, मैंने कवर करी है कि सेम सेक्स मैरिज के अंदर जो है पटिशन्स डाली गई सुप्रीम कोर्ट में बाय टू गे कपल्स कि हमें जो है सोलेमनाइजेशन का मतलब क्या बना कि हमारी जो सेम सेक्स मैरिज है उसको रिकॉग्निशन दिया जाए. ठीक है, लीगलिटी दी जाए जैसे कि और मैरिजेस को दी जाती है अंडर द लॉ ऑफ इंडिया. ठीक है, पेज नंबर 11 इसमें बताया गया व्हाट इज ब्लू बगिंग. ब्लू बगिंग क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हैकिंग दैट लेट्स अटैकर्स एक्सेस अ डिवाइस थ्रू इट्स डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन. Once a device or phone is blue bugged, a hacker can listen to the calls, read and send messages, and steal and modify contacts. It started out as a threat for laptops with Bluetooth capability. Later, hackers used the technique to target mobile phones and other devices. तो what is blue bugging and how is it used? ये तो बोल दिया हुआ है. ठीक है, how is it used to hack Bluetooth enabled devices? Several smartphones have their Bluetooth setting on discovery mode as it is default setting, making it easy for hackers to access the phones when they are within 10 meters from the device. Minimum 10 meters. How does blue bugging hack devices? The blue bugging attack works by exploiting Bluetooth enabled devices. The device's Bluetooth must be in discoverable mode, which is the default setting on most devices. The hacker then tries to pair with the device via Bluetooth. Once a connection is established, hackers can use brute force attacks to bypass authentication. They can install malware in the compromised devices to gain unauthorized access to it. Blue bugging can happen whenever a Bluetooth enabled device is within a 10-meter radius of the hacker. However, according to a blog by VPN service provider NordVPN, hackers can use booster antennas to widen the attack range. How can one prevent blue bugging? Turning off Bluetooth and disconnecting paired Bluetooth devices when not in use, updating the device's system software to the latest version. Limited use of public Wi-Fi and using VPN as an additional security measure are some of the ways to prevent blue bugging. Users must also watch out for suspicious activities of their devices. NordVPN suggests if your phone is suddenly disconnecting and reconnecting calls, or if you notice messages that haven't been sent by you, it could indicate that someone is controlling your device. Reset the device to its factory settings or uninstall any apps
you don't recognize. One should also monitor sudden spikes in data usage. If the amount of data used suddenly spikes beyond reason, someone could be controlling the device as part of a botnet that eats up the data. 14th page पे कि the Nagaland group to raise its bifurcation bid with Shah, the Home Minister. ठीक है. The Eastern Nagaland People's Organization has decided not to participate in the Hornbill Festival and threatened to boycott the 2023 assembly elections in the state if its demands is not fulfilled. The government will not उसका लिखा थर्ड हाईलाइट है. उसके बाद इसी से रिलेटेड है. सेकंड न्यूज़ अलग है. तो थर्ड न्यूज़ में बोला कि अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO said Mr. Shah has invited a team to discuss the statehood demand for 6 of the Nagaland's 16 districts. 6 major tribes dominating these districts have been demanding the creation of Frontier Nagaland, Amit Shah, to be free from decades of neglect. To skip the festival, the ENPO had earlier decided not to participate in the state's flagship Hornbill Festival that starts on December 1. अब लास्ट न्यूज़ आज की सेकंड हाईलाइट है. द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन्स अंडर द प्रपोज्ड डाटा प्रोटेक्शन लॉ एज इट विल गेट एक्सेस टू पर्सनल डाटा ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लाइक नेशनल सिक्योरिटी, पेंडेमिक एंड नेचुरल डिजास्टर्स. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर शेड. ठीक है. तो ये वाली जो न्यूज़ है ना डाटा प्रोटेक्शन बिल की, ठीक है, जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी वैसे वैसे पढ़ेंगे. ये इंपॉर्टेंट कब होगी? अगर लोकसभा राज्यसभा पास कर देंगे तब तो भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी. ठीक है. लेकिन फिर भी अगर ये जब टेबल्ड होगी पार्लियामेंट में तो उसके बाद न्यूज़ में आएगी तो तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे. अभी दिमाग में रखेंगे हाँ भाई ड्राफ्ट जो प्रपोज्ड डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, ठीक है, अभी उसको गवर्नमेंट प्लान कर रही है और जब आएगी एनालिसिस तब करेंगे उसके बारे में. ठीक है. थैंक यू.